वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। आज हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। काइंडली गिव मी द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट is very important. Whenever you do the practical problem with respect to ITC, this line item will definitely come. So therefore, I have made one query, or I have taken the query from the material, institute material, and kindly give the answer. XYZ enter into the contract for supply of 10 metric of the chemical of rupees 1,18,000, including IGST 18,000. In the month of August, chemical is to be delivered in the lots over a period of 3 months. So it will be like installment or multiple lot. ABC raised the invoice for the entire month in the August. Can he raise the invoice in advance? Answer is yes, he can raise the invoice in advance. And XYZ also make the payment in the same month. So invoice has been raised in August, payment is also made in August, but the supply is completed in November. So XYZ paid the full taxes as early in the August. Question is, can he take the ITC of the same in August? उसके पास टैक्स इनवॉइस है, उसके पास 2B में ट्रांजेक्शन आ रहा है, पेमेंट भी कर दिया. Now please tell me whether he would be able to take the ITC or not. ITC in this question can be availed? Answer is no, because we have discussed that ITC can be availed only on the last lot or installment. ITC can be availed only on the last lot or installment. You can see here, first proviso, if the goods are received in lot on installment, the registered person entitled to take the ITC upon last lot or installment. ठीक है. Now, someone are saying that please explain the 16.4. Let me explain the 16.4, then we will go to the today topic. The 16.4 is the time limit to take the ITC. You cannot take the ITC for infinite period. Suppose there is a tax invoice of 22-23 financial year, and you have not taken the ITC of the financial year 22-23. What is the last day to take the input tax credit? You can take after the end of the financial year till 30th November or furnishing of annual return, whichever is earlier. They are fixing the date. They have fixed the date. It means you file any GSTR 3B, whether it is of April or May or June or July or August, doesn't matter. They are fixing the last date to take the input tax credit. So what is the last date to take the ITC according to 16.4? That 30th November after the end of the financial year to which such invoice relate, or furnishing of annual return, whichever is earlier. ठीक है. So first confirm whether 16.4 is clear to you or not. Multiple participant has asked the question. Isan and Jeevan. पहले मुझे कंफर्म करो 16.4 is clear or not. मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा. प्लीज कंफर्म वन बाय वन. आई विल एक्सप्लेन इन बिट्स एंड पीसेस.
नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, 30 नवंबर का कोई रीजन नहीं है। नॉर्मली टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट जो वो है ट्रांसफर जिसके प्राइसिंग एप्लीकेबल है, तो ऑडिट के इनकम टैक्स के साथ लिंक किया है। सो इज द 16.4 इज क्लियर? एक बार कंफर्म करो क्विकली, ईशान, जीवन एंड एवरीवन हु हैज रेज्ड द क्वेश्चन फॉर द 16.4। भूमिका, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? तो 16.4 का लास्ट डेट क्या है कि साल खत्म होने के बाद इनवॉइस कौन से साल का है? लेट्स से इट इज ए फाइनेंशियल ईयर 22-23। सो लास्ट डेट वुड बी आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल 30th नवंबर, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नाउ देयर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट एप्लीकेबल, विल एक्सप्लेन। ईशान, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कब ये नॉट एप्लीकेबल है। सो ओके, व्हेन यू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, when you reverse the input tax credit because of 180 days का concept, correct? If the supplier not made, if the recipient not made the payment to the supplier, ITC need to be reversed. This reversal ITC can be reclaimed in future. There is no time limit applicable of 16.4. ठीक है? Self invoicing, when the transaction is covered under RCM and supplier is unregistered, then Bhumika, rate of interest is 18%. It is prescribed. It is prescribed by way of notification, but the rate of the interest is 18% for tax liability as well as reversal of ITC. दर्श, मुझे एक बार कंफर्म करो, भूमिका क्लियर है, ईशान क्लियर है? एक बार कंफर्म करना क्विकली। लास्ट डेट टू टेक द 30th सितंबर नहीं है दिव्या, दिव्या बेटा 30th सितंबर नहीं, अब इसको काट के इंक्रीज कर दिया। अर्लियर इट वाज 30th सितंबर, नाउ इट इज 30th नवंबर। 16.4 has been amended. Now it is 30th November. Or last same annual return, whichever is earlier, that is okay. Divya, please confirm. And Komal, please confirm. And Darshan, आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर किया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्ड में क्लियर कर दिया ना? किसने पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट का? ठीक है ना? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैं इनका क्वेश्चन ले रहा हूं। एक सेकंड रुकना। भूमिका, आपने 36.4 पूछा है। 36.4 सिंपल कहता है कि जब सप्लायर GSTR1 फाइल कर देगा एंड रिसिपिएंट जो कि ITC लेता है, इट शुड अपीयर इन द GSTR2B, दैट्स इट। सो प्लीज डू नॉट लुक द ओल्डर 36.4. It was talking about 20%, 10%, 5%, etc. But now what is the rule 36.4? It is linked with the 16 subsection 2 clause double A. Supplier file the R1, it should appear in the GSTR2B. And the rate of interest is 18%. I have told you. भूमिका, आपके तीनों डाउट क्लियर कर दिए, पहले क्विकली कंफर्म कर दो कि तीनों क्लियर है, so that I can move to the. I have missed the last lecture which I go through with recorded. Okay, I have the few. हाँ, वर्षा आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I will take the doubt for next 10 minutes. ठीक है, मैं 10 मिनट डाउट लूंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, मैं वापस नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। मैं 10 मिनट और डाउट लूंगा। क्विकली आपको जो भी पूछना है प्लीज पूछते रहिए। ठीक है, भूमिका का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। दर्शन, लिसन केयरफुली। अवेल मतलब क्लेमिंग एंड अवेलिंग आर सेम। क्लेमिंग द ITC और अवेलिंग द ITC आर सेम. What is the mode to claim or avail the ITC? Only GSTR3B by the recipient. अब आपने utilizing means once it will be availed, then it will be credited to the electronic credit ledger. Utilize means आपने उसको tax liability के साथ adjust कर दिया, आपने उसको यूज कर लिया ITC को टैक्स लाइबिलिटी के लिए। जब आप यूटिलाइज करोगे ना, तो आपका जो बैलेंस है, दैट बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड। प्लीज कंफर्म दर्शन, योर क्वेरी इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीक्षिता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 16 टू बी विथ नहीं क्वेश्चन नहीं, अच्छा आंसर है उसका।
how to prevent the answer for this question? How to present the, how to see, write the language of the 16 subsection 2 का proviso, which talks about that you should take the ITC only on the last lot or installment. ठीक है? And also you should write in short the all the condition of 16.2. सेल्फ इनवॉइसिंग किसान क्लियर है, जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में कवर है. लेट्स से यू आर टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर, और लेट्स से यू आर टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द लीगल सर्विसेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड एडवोकेट. यू नीड टू प्रिपेयर द सेल्फ इनवॉइस. 16.3 related to the depreciation. Diksha, simple है. You can take the depreciation on the taxable value, no problem at all. Can you take the ITC on the capital goods? Yes, always available. There is no problem. Only one problem. If you are taking the depreciation on taxable value plus taxage, if you are taking the depreciation on the taxable value plus taxage, then you cannot take the ITC of the taxes, because यहाँ पे डबल एडवांटेज हो गया ना टैक्स का. एक तरफ आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो और एक तरफ आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो. कैपिटल गुड्स का आईटीसी इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैपिटल गुड्स का आईटीसी इजीली ले सकते हैं अगर मैंने डेप्रिसिएशन सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पर कैलकुलेट किया. मतलब लेट से 10 लाख रुपए मेरा कैपिटल गुड्स का टैक्सेबल वैल्यू, 50,000 मेरा जीएसटी है. टोटल कितना अमाउंट है? 10,50,000, 10,50,000. Then if you have capitalized 10 lakh, then you can definitely take the ITC, no problem. But the problem is, if you capitalize entire value 1050, then you cannot take the ITC. Confirm करो बेटा, is it clear? दीक्षा, मनीषा, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिपीट अगर मैं बार बार करता रहूंगा ना पिछली वाली क्लास का, तो मैं नया आपको नहीं सिखा पाऊंगा. रिकॉर्डिंग सुनिए आप. Probably you'll join late. Probably you join late. ठीक है, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहा हूं एंड देन विल स्टार्ट द टॉपिक. आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. वर्षा, इफ सप्लायर डज नॉट फाइल द GSTR1 and upload with other GST number, then what is the solution? No solution. ITC won't be available to the correct ITC, correct taxpayer. Only solution that he can do the amendment. He can do the amendment. वो अमेंडमेंट कर सकता है. उसकी टाइम लिमिट कितनी है वो जीएसटी रिटर्न में बात करेंगे कि रिटर्न की टाइम लिमिट क्या है. ऑलमोस्ट सभी जगह टाइम लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, वही नवंबर वाला. बट हम लोग वहां पे रिपीट करेंगे. मतलब अगर मैंने गलत जीएसटीआर वन बैठते टाइम गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, तो क्या करूंगा मैं? अगला जब जीएसटीआर1 फाइल करूंगा ना, तो उसको अमेंड कर दूंगा. दैट्स इट. आईएफएफ क्या है राजीव आईएफएफ क्या है? B2B फैसिलिटी. B2B ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए एक फैसिलिटी बना दिया फॉर क्यूआरएमपी टैक्स पेयर, क्योंकि क्यूआरएमपी जीएसटीआर1 तो क्वार्टर के बाद फाइल करेगा. तो अगर उससे किसी आदमी, किसी ऐसे रिसिपिएंट ने परचेज किया जो मंथली है, तो वो आईटीसी कैसे लेगा? जब तक जीएसटीआर2बी में नहीं आएगा रिसिपिएंट के. लेट्स से आई एम क्यूआरएमपी टैक्स पेयर और लेट्स से यू आर मंथली टैक्स पेयर. आई एम मेकिंग वन सप्लाई टू यू एंड यू कैन टेक द आईटीसी ओनली व्हेन इट अपीयर इन द जीएसटीआर2बी. बट मैं तो R1 अपना कब फाइल करूंगा? आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर. तो फिर आपको आईटीसी कब मिलेगा? आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर. तो इसको सेव करने के लिए यहां पर एक आईएफएफ इंट्रोड्यूस किया कि मैं, जिसका ऑप्शन क्या है? क्यूआरएमपी है, क्वार्टरली रिटर्न है, बट मंथली बेसिस पर M1 एंड M2 के लिए वो आईएफएफ फर्निश कर देगा. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, जिसमें B2B को रिपोर्ट करने से वो ट्रांजेक्शन आपके 2B में मंथली पे आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल? एक बार कंफर्म करना राजीव, इज इट क्लियर? मीनवाइल वर्षा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आन. GSTR3 is coming out of population, and how can ICT will be reversed if it is not correct? ITC will be reversed if it is. अभी उस पॉइंट में मत जाइए कि क्या ऑटो पॉपुलेट होता है, कैसे ऑटो पॉपुलेट होता है, क्योंकि वो तो आपका रेगुलर फैसिलिटी है. अभी आप लॉ समझिए, लॉ में क्या रिक्वायरमेंट है वो समझिए. वो 3B ऑटो पॉपुलेट होता है, नहीं होता है, डबल होता है, कैसे होता है, क्या करना, उसको एक बार भूल जाइए आप. बट अभी आप सिर्फ समझिए लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, लेट्स मूव टू द ईशान. आपका मैं अभी कवर कर रहा हूं. आई हैव द स्लाइड. जो आपका अगला क्वेश्चन है, आई हैव द स्लाइड, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट रिपीटिंग.
अभी भी कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया तो बता दीजिए, मैं 2 मिनट ले लूंगा। मनीषा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। 36(4) क्या है? देखो 36 जब क्लॉज डबल ए ऐड किया 16(2) में, ठीक है, तो क्या हुआ, ये कंडीशन डाल दी कि सप्लायर जब GSTR1 भरेगा और वो रिसिपिएंट के यहाँ पर वो कम्युनिकेट होगा। 36(4) ने बताया कि वो कम्युनिकेट कैसे होगा, कि जब सप्लायर R1 फाइल करेगा तो रिसिपिएंट के 2B में आएगा, तब वो ITC ले सकता है। ठीक है, तो ये बात जो GSTR2B में जो आएगा ना, ये आना कंपलसरी है। ये किसने कहा? ये 36(4) ने कहा। इज इट ओके? ठीक है बेटा, कंफर्म करो मेरे को ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी और भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो पूछ लो मेरे को, लास्ट 1 मिनट। मनीषा एक बार कंफर्म करना बेटा, अदरवाइज और किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग है प्लीज आस्क। वर्षा क्लियर है आपको? ईशान आपका पॉइंट अभी स्लाइड में कवर है इसलिए मैं नहीं ले रहा। एंड दर्शन क्लियर, भूमिका क्लियर, दीक्षा, दीक्षा क्लियर हो गया आपको? अच्छा, नाउ गॉट इट, ओके। एंड वर्षा का वही रिवर्स, वाहिदा, सॉरी वाहिदा आपका मैंने भूल गया था। रिवर्सल ऑफ द ITC मींस गिविंग बैक द ITC टू द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, सुपर्ब अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही है बेटा। मतलब ITC का रिवर्स करना मतलब मैं पैसा गवर्नमेंट को वापस दे रहा हूं। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। इनडायरेक्टली करेक्ट, अंडरस्टूड सर, एक्चुअली आई वाज रीडिंग द मटेरियल विदाउट गोइंग थ्रू द अमेंडमेंट। मनीषा हाँ बेटा समझ गया, लेकिन अभी है ना बहुत अमेंडमेंट हुआ है। अभी अगर आप मटेरियल देखोगे ना तो सफिशिएंट है। आप मेरे नोट्स देखो ना, मैंने इसको अपडेट किया है। जो मेरी PPT है ना वो अपडेटेड है। मैं आज दे दूंगा आज तक की क्लास का, इट विल बी अपलोडेड इन योर लॉगिन। तो आप इसको देखो, क्योंकि अगर आप वो पुराना वाला देखोगे ना तो दिक्कत हो। दर्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, 16(2)B एप्लीकेबल नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए, मैंने पढ़ा दिया, उसको छोड़ दीजिए। जीवन, ISD एंड बिल टू शिप टू आर सेम? नो, ऑल टुगेदर डिफरेंट। ISD सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ही एप्लीकेबल होता है, सेम कंपनी में, जिसका GST नंबर अलग है बट कंपनी सेम है। बिल टू शिप टू मॉडल मतलब कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी फॉर एनीवेयर, इट कैन बी फॉर एनी पार्टी। मतलब मैं बिलिंग किसी और को कर रहा हूँ और शिपिंग किसी और को कर रहा हूँ। आपने मुझे बिल करने के लिए कहा और मुझे आपने अपना एड्रेस कहीं और बताया डिलीवरी का। इट कैन बी हैपन एट एनी, बिटवीन एनी कस्टमर और एनी सप्लायर। बट बिल टू शिप जो ISD है ना, वो हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में होता है टू डिस्ट्रीब्यूट इनपुट सर्विस, कॉमन इनपुट सर्विस। ठीक है जीवन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द, अब बहुत हो गया अपना, 20 मिनट मैंने स्पेंड कर दिया। इज इट ओके ना? कंफर्टेबल है ना सब लोग? अभी भी आप लोगों ने मेरे को कनेक्ट नहीं किया सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर आप सब लोग कनेक्ट कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कौन पास हो रहा है, कौन कहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहा है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। प्लीज रिमेंबर, भूलना मत, मैं आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूं विद रिस्पेक्ट टू GST। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने कर ली थी लास्ट क्लास के लिए। अब मैं वापस आज सेकंड डे में ITC के रिगार्ड में आता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस जो ईशान ने क्वेश्चन पूछा ना, मैं उसी पार्ट को रिपीट करता हूँ। ठीक है, 180 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है एक बार मुझे ना, हमने पढ़ा था, एक बार मुझे ये बताएं। एक मिनट को बताइए मत, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 180 डेज के कॉन्सेप्ट की, मैं बात कर रहा हूँ 180 डेज के कॉन्सेप्ट की। क्या है 180 डेज का कॉन्सेप्ट? सप्लायर, समझिएगा पूरा गेम। सप्लायर ने माल सप्लाई किया टू द रेसिपिएंट, ये इमीडिएटली ITC ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द कंडीशन। GSTR1 जब फाइल करेगा ये इसके 2B में आ जाएगा। When all the conditions are satisfied, then ITC would be eligible. Perfect. Now, ITC would be eligible. बट अगर ये रिसिपिएंट सप्लायर को पे नहीं करता विद इन 180 डेज, इंपॉर्टेंट है 180 डेज की काउंटिंग कहां से है? 180 डेज की काउंटिंग कहां से है? सर मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूं, फेल टू पे। ठीक है, फेल टू डू सो, फेल टू पे, देन जो 18 जो उसने ITC लिया है वो ITC उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ITC उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इफ सप्लायर हैज sold the goods to R, then he has not made the payment of 180 days. 180 days का काउंटिंग कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस।
और उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखो, आईटीसी रिवर्स करो या ऐड करो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, बात बराबर है। See, there are two possible way. If you read the language of 16.2 along with rule 37, तो यहाँ पे दो पॉसिबल वे है इस आईटीसी को रिवर्स करने का। या तो रिवर्स कर दो आप सिंपल आईटीसी, या ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। दोनों का मतलब सेम है, बट प्लीज नोट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल राइट बोथ द थिंग्स। मतलब शैल पे और रिवर्स, यू हैव टू यूज बोथ द वर्ड, यू हैव टू यूज बोथ द वर्ड। कितना पे करना पड़ेगा, कितना रिवर्स करना पड़ेगा? पूरा नहीं, प्रोपोर्शनेटली। ये वर्ड भी आना चाहिए। If the recipient failed to pay to the supplier within 180 days, then he has to pay or reverse amount not paid to the supplier proportionately along with interest. Rate क्या interest का? 18%. इन द जीएसटीआर 3B कौन सा फॉर्म यूज करेगा? जीएसटीआर 3B। इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड आफ्टर 180, जैसे 180 डेज खत्म होगा तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ देयर आर 3 सिचुएशन व्हेन 180 डेज का रिवर्सल इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। लेट्स से आई मेक एस लिमिटेड as making the supply to the R limited, and S is an, let's say, transporter. R is paying the tax under reverse charge directly to the government. In that case, whether R make the payment to the S within 180 days, after 180 days, no problem. He is not required to reverse or pay the ITC. Second, you remember the Schedule 1 transaction. There is a concept of Schedule 1, supply even without consideration. So in that even supply without consideration, because there is no consideration involved. Schedule 1 is talking about the 4 circumstances when you will treat the transaction as supply even though it is a free transaction. एक बात बताओ, अगर ट्रांजेक्शन ही फ्री है तो 180 डेज का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा पेमेंट का? वो तो कंप्लीट फ्री ट्रांजेक्शन है, तो हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज विल अराइज? सो अगेन दिस इज a second situation in which reversal will not be applicable. What is the third? This point we have already discussed in the value of the supply. What is that point? अगर याद है ना एग्जाम्पल, the responsibility is of the supplier and incurred by the recipient, and to that extent it has been reduced from the price, from the value. 15 subsection 2 says this amount you have to add back in the value. Once it is added back, to that extent the recipient will not pay. Why? Because he has already paid on behalf of the S limited. So to that extent it will not pay. So it will be treated as paid and no reversal would be applicable. बेटा मैं सिर्फ एक ही सोशल मीडिया की बात करता हूँ, लिंक्डइन में, और मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है। मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है ताकि आप लोगों की प्रोग्रेस मुझे मालूम चलती रहे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देयर इज नो प्रॉफिट इन्वॉल्व। मैं सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ बिकॉज क्लासेस इज ऑनलाइन। मैं चाहता हूं कि आप कितना मार्क्स अचीव करते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आई शुड बी अवेयर अबाउट दैट एट सेकंड। ठीक है, सो दिस इज ओनली, अगर कोई नहीं करना चाहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। मतलब इसको प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मैं हर बार क्लास में यूज करता हूं वर्ड, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट माय मार्केटिंग एट ऑल। मार्केटिंग क्या करूंगा सर, मैं किसी को तो पढ़ाता नहीं हूं, प्राइवेटली मैं पढ़ाता नहीं हूं। ठीक है, सो दर्शन, अगर सी पॉइंट क्लियर नहीं है तो मतलब वैल्यू ऑफ द सप्लाई में प्रॉब्लम है। आपको ये पॉइंट तो मुझे बताना ही नहीं है, ये पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, मैं क्लॉज बी, सॉरी। This point I should not repeat, but let me repeat once again. Supplier के बिहाफ पर recipient अगर कोई expenditure करता है
एंड दैट एक्सपेंडिचर का जितना अमाउंट है उतना सप्लायर अपने इनवॉइस से कम कर देता है, तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई का ये प्रोविजन कहता है इतना एड बैक करो। अब एड बैक तो हो गया, उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज हो गया, बट रिसिपिएंट तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है किसी और को, या सप्लायर के ब्याह पर एक्सपेंडिचर कर चुका है, तो इतना अमाउंट तो कभी रिसिपिएंट देगा ही नहीं ना, एक्चुअली तो पे नहीं करेगा। सो इट विल बी डीम्ड टू बी पेड, और आई कैन से नो रिवर्सल वुड बी एप्लीकेबल। मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, मैं सच बता रहा हूँ, ये 180 डेज का कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा जबरदस्त है। गिव मी द आंसर टू माय क्वेश्चन, यू कैन ट्रीट द सेम एज ए क्वेश्चन ईयर। हु हैज मेड द पेमेंट टू हुम? 180 डेज में कौन किस पार्टी को पेमेंट कर रहा है, अगर नहीं करता है तो रिवर्सल करना पड़ता है। प्लीज टेल मी हु इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट टू हुम? मुझे आप आंसर करें इन क्वेश्चन का ना, मतलब ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मतलब ये ना 180 डेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और ये अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे आप इन सब का आंसर दीजिए। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। रिसिपिएंट टू सप्लायर, व्हेन दिस रिवर्सल ऑफ द 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। मुझे सिचुएशन बताओ जहां पे रिवर्सल ऑफ 180 डेज नॉट एप्लीकेबल। वो सिचुएशन बताओ जिसमें 180 डेज का क्राइटेरिया जस्ट ना वो भी हमने डिस्कस किया, बट आपको वापस लिखना है। 3 सिचुएशन हमने बात की, तीनों बताओ मुझे, आप चैट में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आरसीएम, ओके। सेकंड इज शेड्यूल 1, बहुत बढ़िया बच्चा लोग। थर्ड इज, यस, अमाउंट पेड बाय recipient to, rather I should say, simply I will add 15 subsection 2 clause B, value of the supply, ठीक है ना। So I will not repeat because I will not write because it's a detailed clause. Please tell the period of interest. Now this question is completed. Next question, third question, please tell the period of interest. कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? कितने पीरियड तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? फ्रॉम द क्लेम टिल द रिवर्सल, जब उसने क्लेम किया और जब उसने रिवर्स किया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ध्यान रखिए। प्लीज टेल द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। पीरियड मतलब कितना दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब रिसिपिएंट ने क्लेम किया और जब वो रिवर्स कर रहा है। भाई रिवर्स या पेमेंट, करेक्ट ना? रिवर्स कर रहा है, रिवर्स इंक्लूड पे, ठीक है ना? मतलब जब आईटीसी लिया और जब वो रिवर्स कर रहा है, शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और शैल रिवर्स द आईटीसी। सो उस पीरियड का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल क्लियर 18%। विल इट बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और सम अदर वे? क्या ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में होगा या कुछ अलग वे भी हो सकता है, अलग पॉसिबिलिटी भी है? Will it always be added to the output tax liability or there is some alternate solution also? Is there any alternate mechanism or add to the output tax liability? Yes, he can do the reversal of ITC as well. Whether it can be claimed in the future, if yes, then when? जो ये रिवर्स किया है उसको क्लेम कर सकता है, अगर हाँ तो कब? जो ये आईटीसी रिवर्स किया है, कैन इट बी क्लेम्ड इन द फ्यूचर? इफ यस देन व्हेन? दर्शन अभी कहाँ टाइम लिमिट की बात कर रहा हूँ। All permutation combination has been captured of this 180 days का concept because it very very important. Whether it can be claimed in future? Yes, when? On payment to supplier. Relevance of 16(4) का time limit on this reclaim of ITC? No relevance, as no time limit on reclaim of ITC. ईशान, अब आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है। जब आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था ना, अब आंसर हुआ है। इज इट क्लियर? और अभी भी आपको कोई डाउट है ईशान? काइंडली आस्क। कैन बी क्लेम्ड अपॉन द पेमेंट अमाउंट, नो रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बहुत बढ़िया। बट कैन बी क्लेम्ड ऑन पेमेंट, बहुत बढ़िया। अर्शिता, माधव, माधव ये 6 मंथ कहां से आया? देयर इज नो टाइम लिमिट एप्लीकेबल ऑन रिक्लेम ऑफ द आईटीसी। कोई टाइम लिमिट नहीं है 16(4) का ऑन दिस रिक्लेम ऑफ द आईटीसी, बिकॉज उन्होंने कहा कि 16(4) is not at all applicable for reclaiming of the ITC. It is open-ended. Yes, it can be claimed on the payment of the such. Yes. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 180 days वुड बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट? 180 दिन का काउंटिंग कौन से डेट से हो? अब 180 days वुड बी
counted from date of invoice. बहुत बढ़िया. Now I have covered everything with respect to this 180 days का concept. I hope it is clear to all. Let's move to the next concept. Now try to understand apportionment of the credit and block credit. Try to understand apportionment of the credit and the block credit. What is the concept of apportionment of the credit? Then we will talk about the block credit. Before that, please give the answer from your logical understanding. If I am making the outward supply which is taxable, can I take the ITC? All other conditions are satisfied. I am talking about if my outward supply is taxable, can I take the ITC? If my outward supply is taxable, can I take the ITC? अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? अरे हाँ मिलेगा भाई, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. If outward supply is exempted, now this is important question. If my outward supply is exempted, can I take the ITC? If my outward supply is exempted, can I take the ITC? अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? कैन आई क्लेम द आईटीसी? आप लोग एक बार ऐसे आंसर कीजिए. प्लीज गिव द आंसर इन दिस वे. आई एम मतलब मिक्स योर आंसर. टैक्सेबल में यस और नो और एग्जेम्प्ट में यस और नो. प्लीज गिव द आंसर वंस अगेन. एक बार आप लोग वापस आंसर मिक्स मतलब वापस आंसर दीजिए बिकॉज इट इज मिक्स्ड. some because of there is a some participant are giving the reply late. नेटवर्क के कारण उनके पास लेट पहुंचता है तो वो लेट आंसर देते हैं, तो बीच में किसी का फास्ट आ गया तो इट इज मिक्स्ड. यस नो यस नो यस नो. मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूं सभी पार्टिसिपेंट को, प्लीज गिव द आंसर कि टैक्सेबल है तो यस नो, एग्जेम्प्ट है तो यस नो. आपका क्या व्यू है? मेरा क्वेश्चन है कैन आई टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट? दैट्स इट. Taxable yes no, exempt yes no. Please give the answer in this way. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. माधव, एग्जेम्प्ट में नो रहेगा. आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चुका रहे तो आपने जो टैक्स चुकाया उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. If I am not paying the taxes to the government on my outward supply because it is exempted, they will never give the benefit. Now the concept is clear where it is written. Now the point which you have given to me, the answer which you have given to me, that is absolutely correct. But in the law, where it is written in the 17 subsection 2. क्या है ये 17 subsection 2? What is that 17 subsection 2? It says that if you are making taxable supplies, ITC can be taken. If you are making exempt supply, ITC can't be taken. But if you are making both the supply, now you are making the supply some taxable, some exempted. You are making the supply some taxable, some exempted. Then what is the position of ITC? This I am explaining right now. So what is the point which I like to clarify? That is clear to all. अब ITC में दो बात लिखता हूं. अगर कोई ITC एक्सक्लूसिवली है और अगर कोई ITC कॉमन है. देखो दो बात करूंगा मैं, ध्यान रखना बच्चा लोग, दो बात करूंगा मैं एक बात करूंगा कि ITC एक्सक्लूसिवली है. एक्सक्लूसिवली का मतलब कि हो सकता वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई से है तो पूरा का पूरा ITC मिल जाएगा. अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई तक है तो कुछ भी ITC नहीं मिलेगा. एक्सक्लूसिवली का मतलब वो ITC जो सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज हो रही है. एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्टेड मतलब
मैंने कोई आईटीसी सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज किया है। अब अगर कोई कॉमन है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट। अगर कोई कॉमन आईटीसी है, कॉमन मतलब विच आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, which are used for taxable as well as exempt supply, then you will take the proportionate ITC to the extent of taxable supply. You will take the ITC to the extent of taxable supply. Concept तो क्लियर हो गया होगा, राइट ना? एक बार कंफर्म करना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? मतलब अभी और बात करेंगे, मैं सब दूंगा, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं सब चीज दूंगा, पर अभी तक जितना बात किया उतना क्लियर है। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से मिस्टर ए इज डूइंग द टू बिजनेस। वन, ही इज प्रोवाइडिंग द टीचिंग, ठीक है। लेट्स से ही इज ऑल्सो मेकिंग द सप्लाई ऑफ एनी एग्जेम्प्टेड आइटम। ही हैज ऑल्सो द supply of FMCG product which is exempted in the GST. He has two business. One, he is doing the teaching which is taxable, and he is also another business FMCG product which are exempted in the GST. So let's say there are two examples. This is one example and he is doing from the one GST number only. He has only one GST number. Now suppose he purchased some laptop for the teaching purpose only. Let's say he has purchased the writing pad. Let's say he has purchased the camera. He has purchased the board for teaching. I can say the taxes paid on these items. I can say the taxes paid on these items. I can say these are exclusively linked to the taxable supplies. Therefore, full ITC is available on that product. पहले मुझे बताइए, ये जो टीचिंग के लिए मैंने एक्सक्लूसिव ITC वाला एग्जांपल दिया, ITC which is used to the exclusively taxable, ये क्लियर हुआ ना? ये कंफर्म करो, तभी मैं दूसरा वाला एग्जांपल में मूव करूंगा। भी मैं तीनों का एग्जांपल दूंगा, 1-to-1 टैक्सेबल, फुल आईटीसी, 1-to-1 एग्जेम्प्टेड, नो आईटीसी, प्रोपोर्शनेट, कॉमन आईटीसी, उसकी भी बात करूंगा, तीनों का एग्जांपल दूंगा। पहले इसका कंफर्म करो, ये तो क्लियर है ना? ये वाला एग्जांपल क्लियर है? अभी बच्चा लोग सब लोग कंफर्म करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको नाम से जानता हूं, दर्शन, ईशान, वैशाली, माधव, आयशा, राजीव, प्रसन्ना, कोमल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब लेट्स से he is making the supply of the FMCG product for which he has purchased the packing material. He has purchased the like polythene, ठीक है, like carton, some tape, machine for packing the FMCG product. Okay. Then in that case, I can say the product which he has purchased, that is used exclusively for exempt supply and hence no ITC. This item like packing material which he has purchased, carton, tape, machine, something like that which is being used for the FMCG product, then in that case we can say, let's say he has purchased the fridge also, refrigerator, and that refrigerator is being used for keeping the FMCG product. Let's say in that case, these items on which taxes is being paid are used exclusively for exempt supply, no input tax credit. Full ITC, no ITC can be claimed. Second example, exclusively linked to the exempt supply is clear to all. FMCG के ऊपर जो पैकिंग मटेरियल परचेस किया मैंने, उसके ऊपर जो भी टैक्स पे किया, it will be not eligible. You will not take single paisa from that.
ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ. इज दिस ऑल्सो क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हुआ, एक्सक्लूसिवली लिंक्ड टू द माधव. माधव क्लियर हो रहा है ना? यू हैव आस्क्ड मी टू गिव द एग्जांपल. माधव क्लियर हो रहा है ना जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं एंड द प्रोविजन विच आई हैव एक्सप्लेन. फार्मस एफएमसीजी, खाने पीने का आइटम. आटा, दाल, चावल, चीनी. नॉर्मली फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं. फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. ठीक है. ठीक है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है. अब मैं आता हूं कॉमन आईटीसी. लेट्स से this particular faculty has hired consultant for filing the GST return. This particular person has hired a consultant for filing its GST return. So when he filed the GST return, and you know that there is only one GST, correct? There is only one GST. So when there is only one GST number, correct? So when the consultant will file the return, obviously he will also report the taxable supplies, also report the exempt supply. He will do the accounting for everything. So I can say the GST paid to the consultant is common item which are linked to the taxable supplies as well as exempt supply. And therefore, it will not be fully available. It will not be fully not available. You can't say. You will say that proportionate ITC you have to reverse. मतलब कुछ ITC मिलेगा, कुछ ITC नहीं मिलेगा. यहां पर क्या है? Proportionate will be linked to the taxable supplies. Now the calculation is not in your inter syllabus. Calculation is being given in the rule 42 and rule 43, which will be covered in the final. This is the syllabus. How to do the calculation? ITC to be reversed. So that will be taken care in the CA final. So you all have to reach to CA final for that. फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना. और जीएसटी में तो डिस्टिंक्शन आनी चाहिए. इज इट ओके? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब मैं आता हूं बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी. इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है. शुभम, हाँ, यस यस. अगर कोई भी आइटम जो मैं यूज करता हूं, इफ आई एम परचेजिंग एनी आइटम एंड विच इज बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जाम, then whatever the GST I have paid on my inward supply, whether it is input service or whether it is capital goods, it become the cost for recipient, because he cannot take the advantage, he cannot take the benefit of that ITC GST paid. So it will not be the ITC, it become the cost. Very good question. क्लियर हो शुभम ना? I am assuming the product of FMCG are exempted. मैं एज्यूम कर रहा हूं शुभम कि जो ये मशीन और जो ये आइटम यूज कर रहे हैं ना, दिस इज यूज्ड फॉर एफएमसीजी एंड विच आर एग्जेम्प्टेड इन द जीएसटी, बिकॉज एक सप्लाई मैंने टैक्सेबल मान ली, टीचिंग वाली. ठीक है, इज दैट ओके? नाउ लेट्स से, नाउ we are talking about the banking company, financial institution, NBFC. What is the special provision for that?
They are saying that for banking company, there are two options. For banking company, there are two options. Because bank also provides some exempt supply, some taxable supplies. Banks also provide some exempt supply and some taxable supply, right now. So if bank will provide exempt supply and bank will provide some taxable supplies, then what? They have to reverse some ITC. In which ratio? Rule 40 to 43, as we have discussed just now. But 17 subsection 4 read with rule 38 giving one more option. So they have two alternative. Alternative number one, that rule 40 to 43 in the ratio of the sales, or second alternative, that they can do the straightforward reversal of the 50%. They can do the straightforward reversal 50%. If they are doing the reversal of the 50%, then no problem not to comply this particular. And that is good thing for them because calculation slightly typical in the rule 40 to 43. So let me give you the example for 17.4 so that I can explain you. And also one more thing, that this 50% reversal will not apply. When it will not apply? If the transaction is between distinct person. Now I am giving the example, then I will explain and will be back on this particular slide. ठीक है, अब मैं आपको example देता हूं. What is the example which I am telling? Let's say ICICI Bank. They have two branches. For the time being, in my example, one branch is Mumbai and one branch is in Delhi. We are doing the calculation of Delhi. They have purchased some material on which the GST was paid rupees 10,000. They have certain input service on which the GST was paid 4,000. They have purchased some capital goods also. They have paid the GST of 6,000. And Mumbai has also raised the invoice to Delhi. Mumbai has raised the invoice to Delhi for distinct, because they are distinct person. Na? One pen, multiple GST, it will be the distinct person. And we know the schedule 1 says that if there is a transaction between distinct person, even without consideration, it is a supply. तो अभी मुंबई ने जो दिल्ली के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. And for that, they have raised the invoice of, let's say, 12,000. What is the total ITC? Total ITC is 32,000. For whom? For Delhi. Now, please tell me how much ITC Delhi has to reverse as per 17 subsection 4. How much ITC Delhi has to reverse for 17 subsection 4? Please tell me. अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट. बहुत बढ़िया जीवन के सो. Your understanding is very sound in this particular point, for which you raise the exempt supply, why ITC not available, and you have explained through chain concept. Really good. Very nice. Keep it up.
Fine. Let me repeat the question. There are two options available with the banking company. One option that 17 subsection 2 wala, rule 40 to 43 ka reversal. One new option is being given by 17 subsection 4, that is 50% reversal ITC, but 50% reversal, that 50% ka reversal will not be applicable on one transaction. Distinct person, right? Now let's read the example. I am saying we are calculating the reversal for ICICI Bank Delhi. He has the ITC on input service and capital goods. This is the GST part. So he has the GST on inward supply of input 10,000, input service 4,000, capital goods 6,000. Also, ICICI Bank Mumbai has raised the invoice on which the GST was 12,000. So the total GST on inward supply was 32,000. Please calculate the ITC to be reversed by ICICI Bank out of the 32,000. Now I'm saying as per 17.4, it means follow the concept of 50%. I hope it is clear now. Please give the answer. कितना ITC उसको reverse करना पड़ेगा? That is my question. दिव्या, सुशील, हर्षिता, क्वेश्चन क्लियर है ना? आप लोगों ने कहा मुझे रिपीट करने के लिए, तो क्वेश्चन इज क्लियर ना? वर्षा, आपका पॉइंट भी क्लियर है? द राइट आंसर इज मनीषा, ईशान, वर्षा, सोनाली, ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर. इसका मतलब बाकी जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने सही आंसर नहीं दिया. ईशान का आंसर ठीक है, वर्षा का आंसर सही है, मनीषा का आंसर सही है, सोनाली का आंसर सही है ना. बाकी एक बार मुझे रिवर्ट करो, क्वेश्चन क्लियर है ना? अगर नहीं है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, बट मुझे करेक्ट आंसर दो कि क्या आंसर करेक्ट है. ईशान ठीक है, वैशाली ठीक है, दर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, सुधांशु थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. हर्षिता, वाई 17.4 डज नॉट अप्लाई? इट इज अ बैंक, देन वाई 17.4 डज नॉट अप्लाई? Harshita, why you are saying that 17.4 will not apply? So fine. Let me give the answer. Let me solve. I think almost all have given the correct answer. So in this question, basically, I need to say what is the 50% ITC which you need to reverse. So some participant has calculated 50% of 32,000 and they are saying 16,000 to be reversed. It is incorrect. Why it is incorrect? Because in the 17.4, we have discussed that the reversal would not apply. The reversal of the 50% would not apply on the supply procured from another registration of the same entity. It means distinct person. That is 100% credit can be availed. And once this option is exercised, then it can be available for the remaining part of the financial year. You cannot change. So in this case, the reversal would not be applicable. इस 12,000 का तो 100% ITC मिलेगा. So 10, 4 and 6, what is the total? 20,000. On this, the reversal of the 50% will apply. So the 10,000 need to be reversed. So how much ITC need to be reversed by the ICICI Bank? So they will reverse 10,000. It means they are allowed to take the ITC of 22,000. Is it clear? अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क. कैसा हो? अकेले अकेले नहीं चलेगा भाई. कैसा वैसे अकेले अकेले नहीं चलेगा यार. शेयर करना चाहिए आपको. ठीक है. क्लियर है भूमिका, हर्षिता, सुधांशु एंड दर्शन. I think, is it clear now?
अगर डाउट है तो मुझे बता दीजिए, आई विल रिपीट, आई विल कंफर्म, आई विल गिव द आंसर वट एवर द क्वेश्चन यू विल आस्क, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आईटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुधांशु, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, आप मुझे बताओ सुधांशु, मुझे बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? मुझे आप बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सबसे पहले मुझे, देर आर 2-3 क्वेश्चन, सो आई विल टेक दैट क्वेश्चन, देन आई विल प्रोसीड टू द। गलत है दर्शन, नहीं। आप आईटीसी अवेल प्लस रिवर्स की बात कर रहे हो, टोटल टैक्स लाइबिलिटी गलत कह रहे हो ना? नहीं, आईटीसी अवेल प्लस रिवर्स कैसे हो गया? जितना रिवर्स करना वही तो मेरा लाइबिलिटी है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी मींस द टैक्स पेबल ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई प्लस रिवर्स चार्ज प्लस आईटीसी। सो अभी उस कॉन्सेप्ट में मत जाइए। सो सेम पैन मल्टीपल जीएसटीएन, सुशील ये तो सॉरी सुधांशु, क्लियर ना? ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, वन पैन मल्टीपल जीएसटीएन। सो दे आर सेइंग इन द बैंकिंग कंपनी, कोमल, इन द बैंकिंग कंपनी दे आर सेइंग यू हैव द वन ऑप्शन ऑफ 17 सबसेक्शन 2। उसमें क्या करना होता है? रूल 40 to 43 को कंप्लाई करना होता है। आर वाहिदा, आई एम एक्सप्लेनिंग। सो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू द बैंक? सी, लेट मी गो बैक फर्स्ट 17(2) मैं क्रक्स में समझाता हूं। इफ एनी सप्लायर is making two category of the supply, which is exempted and which is taxable, they have to follow the concept of 17(2), or I can say if it is exclusively taxable, full ITC, exclusively exempted, no ITC, commonly used for both taxable and exempted, then they can take the proportionate ITC to the extent of taxable supply, and this is being given in the rule 40 to 43, and this is 17 subsection 2. R Wahida Afreen, please confirm, is it clear? 17(2) क्रक्स में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, they are also providing exempted, they are also providing taxable supplies, correct? So if they are doing so, then one option they can do the reversal as per 17(2) exclusively and common वाले concept के कारण। दूसरा है कि 50% रिवर्स कर दो, जितना भी आईटीसी है आउटसाइडर वाला, जितना भी आईटीसी है आउटसाइडर वाला उसका 50% रिवर्स कर दो। कौन से को रिवर्स नहीं करना है? विच नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इफ देयर इज ए आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन इनवॉइस। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आईसीआईसी बैंक दिल्ली की बात कर रहा हूं। जितनी भी आईटीसी है उसको छोड़ दो जो डिस्टिंक्ट पर्सन से आई है। कौन सा ट्रांजेक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन से है मेरे एग्जांपल में? यही कहेंगे ना कि भाई आईसीआईसी बैंक ने जो दिल्ली को इनवॉइस रेज किया है, ये वाला, यही तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला है। और इसमें बोलता है आप पूरी आईटीसी ले लो, इसमें आप रिवर्स मत करो, अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज होगा ना, तो इसको रिवर्स मत करो, इसका तो पूरा ले लो। बाकी कौन सा बचा जो आउटसाइडर वाला है? सुशील, सुधांशु, कौन सा आईटीसी बचा जो आउटसाइडर वाला है? भाई यही हुआ ना आउटसाइडर वाला आईटीसी। तो ये टोटल 20,000 है, तो इसका बोला 50% रिवर्स कर दो, मतलब 10,000 आप रिवर्स कर दो और 10,000 ले लो। तो एक तो मैं कॉमन में 10,000 ले लिया और ये 12,000 तो मुझे पूरा मिलेगा, तो टोटल 22 मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब अभी भी कंफ्यूजन है ना बेटा, तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शन, मैं आपके पॉइंट पर आता हूँ।
आप लाइबिलिटी निकाल क्यों रहे हो? आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्यों निकाल रहे हो? मुझे एक बार कंफर्म करना, कोमल एंड सुधांशु, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, भूमिका एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी आपने लाइन लिखी है वो एकदम 100% करेक्ट है। जो भी आपने सेंटेंस लिखा ना वो एकदम 100% करेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। सो इज इट क्लियर टू ऑल? एक बार फिर भी कंफर्म कर दो मुझे वापस, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, अब समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सी द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 1.5 hour, excellent, important, very very important sir, it's very very important. Subham, it is very fair because they will pay full tax on the distinct person transaction. They will probably will pay full tax on the banking company. If they are having the transaction of the distinct person, they will pay full tax. So they are taking the full ITC. So no problem. At one hand, you are asking the tax. So second hand, they are taking the full ITC. So there is no problem. Susil, I was saying in this question, total 20,000 from outsider. So iska 50% reverse karna. So the total reversal is 10,000. एक मिनट देना। मनीष जी 10 मिनट का ब्रेक चालू कर दीजिए।
So there are 3-4 questions. Let me take the question and then we'll start. Darshan has asked that in case of the supply 100% ITC, not use the word deemed beta, use the word distinct person. Then statement is correct. Isan is also asking the same question, so answer is correct. Isan is also asking one more question. Can we pay the GST from the ITC? Yes. The payment of the GST section 49 tell, which we will discuss in the subsequent class of the ITC. We are going to discuss. But the one thing is clear that liability can be paid through ITC or can be paid through cash. Both are to be considered as payment of tax. Now let me take the question of Sneha. It's a long question. Sneha is asking that if the supplier is unregistered under GST, he can't claim the ITC, can't collect the tax. Absolutely. But if we sell the grocery item, which are at MRP, then he is collecting the tax from his customer. So this is wrong. No. See, in the GS, in the valuation. So again, you will discuss in the final level, not in the current inter level. But there is a concept of Rule 35, which talks about the backward calculation. Backward calculation means, let's say I'm supplying this particular item at rupees 20. So in that there will be the GST inclusive of that. So I will sell the MRP, but I will if I will do the liability in the backward calculation. So it means let's say 18 rupees is the value and that 2 rupees is the GST. Your point is correct. That if I am not registered, but I'm selling the grocery at MRP, which include the GST. So is it not correct? Why beta it is not correct? It is not incorrect. It is not incorrect. Why? Because he will pay the GST. Let's say it is not the MRP concept. Let's say it is not MRP concept. Then he will pay the GST at the time of procurement, of which he cannot take the ITC. ITC नहीं मिलेगा ना उसको. अब क्या है? अब वो जो फर्दर सप्लाई करेगा उसके अंदर कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना उसका जो टैक्सेस पेड किया. तो इनडायरेक्टली ही हैज टू कलेक्ट द टैक्सेस. भी कॉस्ट में इनबिल्ट करके करो तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. जब मान लो प्रॉफिट मार्जिन जितना भी है तो कॉस्ट में इनबिल्ट होगा ना. तो कहने का मतलब वो उतना पार्ट रिकवर कर सकता है. तो इन द जीएसटी बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन प्रोविजन, सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट. वन इज ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस जीएसटी and second is MRP, in which the GST would be calculated from backward calculation. So I don't find any problem. कोई काउंटर क्वेश्चन है आप रेज कीजिए. अगर क्लियर है तो आप कंफर्म कीजिए इट इज क्लियर. We'll move to the next point. Is it clear बेटा? चलो अब हम बात करते हैं 17 सबसेक्शन 5 क्या कहता है. ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ब्लॉक है, क्रेडिट ब्लॉक है. ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? मतलब आप आईटीसी नहीं ले सकते. ये इसकी जो लैंग्वेज है 17 सबसेक्शन 5 की, इसकी लैंग्वेज नोट कीजिए. ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रही है. और नॉन ऑब्स्टेंट कौन से प्रोविजन को? 16(1) एंड 18(1). 18 हम बात करेंगे, बट 16(1) क्या है? अगर कोई एक्सपेंडिचर, अगर कोई इनवर्ड सप्लाई मेरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो मैं नॉर्मली 16(1) के कारण आईटीसी ले सकता हूं. बट ये पॉइंट क्या कह रहा है? 16(1) कह रहा है कि 16(1) को भी ओवरराइड करेगा. Meaning thereby, even if the below inward supplies are in relation to your business, but if the name is written in 17 subsection 5, then the credit would be blocked. You are not entitled to take the ITC. You are not entitled to take the ITC. Sir, you might do the argument.
You might do the argument, sir, it is in the course or furtherance of business. Why I am not allowed to take ITC? Answer is 17 subsection 5 is starting with non-obstant clause and override 16.1 and 18.1. Even though prima facie you are eligible to take input tax credit, but if it is being covered by 17.5, then you won't be able to take ITC. What is the nature of expenditure? Motor vehicle, food and beverages, outdoor catering, some rent-a-cab, construction, personal expenditure. Certain type of the expenditure are covered in the 17.5. I am using the word again and again expenditure, but it doesn't mean that it is only limited to expenditure. It may be input service or capital goods. ITC would be blocked if the name of that inward supply is coming in the 17.5, starting with the first. It says that motor vehicle for transportation of passenger having approved sitting capacity of not more than 13-seater is blocked. Motor vehicle. Which motor vehicle? Every motor vehicle? No. The motor vehicle which is used for the transportation of person. Having whether all passenger motor vehicle blocked? No. Having approved sitting capacity of not more than 13 seaters, including driver. Okay. Then it is blocked. However, if these vehicle, which is transportation of person up to 13-seater, you can take the input tax credit if it is a further supply, transportation of passenger, imparting the training or driving of such a motor vehicle. So it means if this particular motor vehicle is being used for the further supply, let's say I'm making the, I'm doing the purchase and then further selling, I can take the ITC. If my business is like transportation of passenger, so I am using the car for the transportation of passenger and which is my outward taxable supplies. So let's say I'm a Ola Uber. Third is imparting the training. So I am purchasing the car from which I am giving the training and which is taxable supplies. In that case, you can take the ITC of the motor vehicle which is used even for person and up to 13-seater. Now let's read again the same provisions from the different angle. I can divide the motor vehicle into two parts. I can divide the motor vehicle in two parts. One is the block vehicle and one is the normal vehicle. Means block vehicle and normal on which ITC can be taken. Which one is the block? Transportation of person. It means I can take the ITC if I have purchased the vehicle for transportation of goods. Every motor vehicle is blocked? No, sir. Only for the transportation of person is blocked. Can I say if I have purchased the motor vehicle for transportation of goods, I can take the ITC. एक बार confirm करो. If I am purchasing the motor vehicle, let's say I am purchasing the truck. Let's say I am purchasing the Maruti. I am Grofer. I am Big Basket. And purchasing the motor vehicle up to 13-seater, but that being used for the transportation of my own goods, can I take the ITC? No problem. You can. Why? Because they are blocking only for the transportation of person. ये बात clear है?
ये बात क्लियर है? If I purchase the motor vehicle which is being used for the goods, मैं एक बार आंसर देता हूँ ईशान एंड दर्शन. आई विल गिव द आंसर बट लेट प्लीज कंफर्म फर्स्ट दैट वेदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ITC would be available. No problem. There is no blockage. They are saying that up to 13-seater only block. It means suppose I have purchased the bus for my business purpose, for pick and drop of my employee. Can I take the ITC? You tell me, if I have purchased the bus having the 52 seating capacity, can I take the ITC? You give the answer. Can I take the ITC if I purchase the bus for my staff? Can I take the ITC? Answer is yes, I can take the ITC because it is more than 13-seater. It is more than 13-seater, so I will be able to take input tax credit, no problem. And suppose the word supply is being written, further supply. And you remember the definition of the supply. Isan, you asked the question rental. Darshan, you asked the question for the business. I have purchased the car and let's say I am providing on lease, rental. Can I take the ITC? You remember supply is being defined in section 7, subsection 1. And what is the clause A? All type of the supply such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental. Correct? All these transactions are covered in the supply. It means I have purchased the car and I am providing the renting. I am not going into the rate notification, sir. Please note, beta, I am not going to the rate notification. I am not talking about any other condition. As of now, by clause A, stand alone by reading the clause A, I can say, if I'm doing my outward supply, which is taxable, I can take the input tax credit. I have given the example, Divya. I have given the example of bus. If the motor vehicle, I have purchased the bus, which is motor vehicle, but more than 13-seater, it is not blocked. It is not blocked. If I purchase a 7-seater used for the business, can I take the ITC? No. You can't take the ITC because it is blocked. You have to tell me whether it is a person passenger car or it's a goods car. Are you moving the goods or are you moving the passenger? Madhav Tiwari, if it is being used for passenger person up to 13-seater, it is blocked. Why it is blocked even for the business purpose? Sir, why it is blocked? It is I'm using only for the business purpose. Let's say I have given the motor vehicle to my director. I have given the motor vehicle to my sales team. Only for the collection from customer, this car to be used. Can I take the ITC? No. It is saying even if it is in the course or furtherance of business. But what is the starting language of 17.5? Notwithstanding anything contained. It means business use would be irrelevant. If it is being covered in this, that will be blocked. When it is not blocked, if you are doing the further supply, if you are doing the transportation of passenger, imparting the training. So you might have the confusion, which question is being asked also, that they are saying transportation of person and here they are saying transportation of passenger. Transportation of person is blocked, transportation of passenger is allowed. Please read one more sentence. What is that? Please read one more sentence. This. The 3 items which we are talking about, it should be your outward taxable supply. It should be your outward taxable supply.
It should be your outward taxable supply. It means the transportation of person means it is being a passenger vehicle. But if it is being used for the further outward transportation of passenger, it means you are collecting the fare on which you are paying the GST. Ola, Uber, you are using for the rent-a-cab business. In that case, that car would be considered as transportation of passenger. ITC would be available. Any question? Kindly ask. जितने भी आपके क्वेश्चन है, please ask. In case of the cab company, ITC is blocked, correct? Bhumika, nahi. कहाँ block है ITC? See, again, see, the ITC ka blockage can be because of multiple reasons. See, listen one point carefully. There are rate notification, which is not in your syllabus. ITC can be blocked because of 17.5. ITC can be blocked because your output supply is exempted. ITC can be blocked because of the rate notification, which is not in your syllabus. So currently we are talking only the law. Whether ITC available or not available because of the rate notification, that is altogether different concept. See, please note one thing. The blockage of the ITC, ineligible, multiple reason. Let's say one reason is 17 subsection 2. One reason is 17 subsection 5. One reason is 16 subsection 2. Correct? If something condition not satisfied. One reason can be time limit of taking the ITC. One reason can be rate notification. See, this is not in our syllabus. So even though you are eligible because of these reasons, but might be it is blocked according to the rate notification. We are not going into that. We are talking about only the provision which is in your syllabus. ये point clear है ना? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि ITC मिल जाएगा रेंट ए कैब के केस में. Might be it is blocked in the date notification. Then क्या होगा? ये point आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Is it okay? एक बार कंफर्म करना. भूमिका, ये बात क्लियर है ना? Apart from these three exceptions, other outward taxable supply for which I am using that particular car, yes, it is blocked. We have to move further transaction, but yes, as of now it is not available. माधव एक बार बात करेंगे बाइसिकल के रिगार्ड. बाइसिकल इज 2-सीटर एंड इट इज नॉट मोटर. बाइसिकल मतलब मोटर व्हीकल के लिए उसका मोटर होना जरूरी है, एंड बाइसिकल डज नॉट हैव एनी मोटर, so it will not be counted as motor vehicle. So you can take the ITC. If one purchase 5-seater car for the, yes, Vaishali, for the ITC available, but for personal taxi purpose, yes, means for further taxable supply. See, can you take the ITC for all outward taxable supply and in which you are using the car? No, sir. Only 3 category of the transaction in which 13-seater passenger car is being used, then ITC can be taken. Madhav, no, not available. Vaishali, taxi travel, yes, you have clarified. Perfect. In case of the cab company, I think almost all are clear. सबका आंसर कर दिया मैंने. Need to explain that. Okay, मैंने यार आपकी कैलकुलेशन यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन है. I think जीवन आपने बहुत बड़ी कैलकुलेशन लिखी है. एज्यूम मैं एक बार चेक नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, बट अगर कॉन्सेप्ट के लिए तो ठीक है, बट डाउट हो सकते हैं. सो आगे बढ़ू मैं. मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस एक्सक्लूड व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल. ठीक है, कई बार समटाइम इट इज बीइंग यूज्ड इन द फैक्ट्री,
So it is being moved on the rail, मतलब fixed rail only for movement of that particular goods. Special purpose vehicle for being used in the factory or any enclosed premises. You know that particular sometime we are forklift are being used for up and down of the goods, or sometime for movement of the person also, for safety purpose in some steel manufacturing company or something like that. ठीक है, vehicle which with less than 4 wheel fitted with engine capacity up to 25 cc. Again, not motor vehicle. Thus, railway, 2 or 3 wheelers with engine capacity up to 25 cc, bicycle, etc. does not fall in the definition of the motor vehicle. क्लियर हो गया होगा आपको ना? आई थिंक माधव, ये आपका तो पॉइंट स्पेसिफिकली कवर किया इसने. नहीं, we can use the ITCs available if it is being used one of the main or core activity of the. नहीं, Manisha, doesn't matter ki whether what is the core business activity, what is the non-core business activity. There is no such differentiation. If you are using the car, motor vehicle up to 13 seater in the 3 exception, then only ITC available. Let's say you are using for 2 purpose, for core and for non-core activity. Let's say core activity is 3 category. What about the non-core activity? रिमेंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा. रिमेंबर बेटा कि दो वो ट्रांजेक्शन ऐसा अगर कोई कार का यूज है ना कि वो 3 पर्पज के लिए भी कर रहा हूं, कुछ अदर पर्पज के लिए भी यूज कर रहा हूं, रिवर्सल वुड कम इनटू द पिक्चर. जो कॉमन वाला पार्ट डिस्कस किया था ना, कॉमन रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल 40 to 43, जो सीए फाइनल में आपका 17(2) वाला, फिर वो कैलकुलेशन आ जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ मतलब टैक्सेबल सप्लाईज और टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एलिजिबिलिटी. जहां पे आईटीसी एलिजिबल है 3 बिजनेस, वो माना जाएगा आपका टैक्सेबल, और बाकी जो सप्लाई के लिए यूज करे वो माना जाएगा आपका एग्जेम्प्ट. तो मतलब उस टाइप की डिटेल कैलकुलेशन आएगी. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बट कैलकुलेशन फाइनल चैप्टर में, फाइनल में. मनीषा, समझ में आया ना पॉइंट आपको मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ? मैं रिपीट करूं क्या? अगर बोल देना बेटा, अगर रिपीट करना है तो ठीक है. कंफर्म तो करो, आप लोग आंसर ही नहीं आ रहा. प्रोपोर्शनेट यूज, करेक्ट. प्रोपोर्शन, मैं प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा एंड विल टेक द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ओनली. ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दे हैव आल्सो गिवन दैट vessel and aircraft. Again, same concept which we have discussed in the last slide now. Same concept. The vessel and aircraft would also be the block category. Here they have not given the concept of up to 13 seater or something like that. But again, if you are using for further supply, transportation of passenger, training or navigating that vehicle, training or flying that aircraft, or transportation of goods, then you can take the input tax credit. इसमें आई थिंक क्लियर है ना, कोई डाउट, कुछ खास पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट पे है. नेक्स्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्विस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट referred to in the clause A or the clause AA. मतलब क्या हुआ? They are saying that the vehicle which we have talked about in the clause A or the clause AA. Clause A में कौन से vehicle की बात की? Motor vehicle plus transportation of person plus 13 seater. इसी vehicle की बात की थी ना हमने. Which motor vehicle we have talked about? Motor vehicle used for the person up to 13 seater, that is covered in the block category. सभी पूरे मोटर व्हीकल की बात नहीं की थी. और क्लॉज AA में वी हैव टॉक्ड अबाउट वेसल एंड एयरक्राफ्ट. ठीक है, अब अगर ऐसा मोटर व्हीकल जो कि ब्लॉक है, द मोटर व्हीकल विच यू परचेज दैट इज ब्लॉक. नाउ इफ यू इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस, देन द ITC of these services
would also fall under block category. ITC of these services would fall under block category. Now they are talking about the proviso. Very, very important. The first proviso is very simple. Clause 1, where the motor vehicle, vessel and aircraft is being used for the purpose specified therein. What is the purpose? The purpose is if it is for further supply, if it is being used for transportation of passenger, taxable supplies, correct? And third is if it is being used for training or flying of that aircraft or motor vehicle or vessel. Or I can say if they are using for the transportation of goods, then also it is allowed. This clause 2, it says that where the taxable person is engaged in the manufacturing of that motor vehicle, let's say I am a Maruti Suzuki company. I am Maruti Industries Limited. I am incurring the expenditure for my manufacturing of that motor vehicle. I can take the ITC because these are the stock item. You can take the ITC. Then in the supply of the general insurance service, in respect of such motor vehicle, vessel and aircraft insured by him. So it means if I am, let's say, general insurance company and I have taken the insurance. So I am basically what I'm doing. So I am providing the insurance. Let me give the example. Okay. So let's say I am general insurance company, GIC. Mr. A has taken the insurance of car from my company. Insurance of car from my company. Now, for which I have taken the insurance premium. Now, let's say this car got accident and then car is being sent to the repair center and for which the bill was 10,000 rupees. And this bill was paid by me. The bill came to me. Then I have paid that bill. Who am I? I'm insurance company. So the question is, can I take the ITC of such repair? Can I take the ITC of such maintenance? Then answer would be yes, because it is being covered in the proviso. So let me repeat again that normally the service of general insurance, servicing, repair, maintenance, insofar they relate to the motor vehicle, vessel, aircraft, ITC not blocked. You can take the ITC, but when it is blocked, if it is covered in the clause A or the clause AA. Proviso says if it is being covered, the motor vehicle is clause A or the clause AA, but it is being used for the purpose specified therein, like further supply, transportation of person, goods, further training or driving that motor vehicle. So then you can take the ITC of these expenditure. Second is saying either you are engaged in the manufacturing of that motor vehicle or you are the general insurance business. Then you can take the input tax credit. Clause AB is completed from my side. अब एक बार आपके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? पहले ना आप मुझे ना क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, क्लियर देखो लो. Now tell me, question number 1, what is the answer? Whether eligible or block, you have to give me only one, eligible or block. So while giving the answer, please say question number 1 and answer is eligible or answer is block. Just that's it. So you please write the sequencing also, so that if you are late in giving the reply or because of internet I'm getting the reply late, so I would be able to understand for which question you are giving the answer. ITC on the car purchased by the manufacturing company for the official use of its employee. ITC. Question number 1, eligible
or block? Eligible or block? Answer would be block category. The question number 1 का आंसर क्या होगा? Block. Because it is being used for the official use of employee. They are not the manufacturing the motor vehicle. Correct? They are not talking about insurance, etc., repair, maintenance. They are saying ITC on the car purchased by the manufacturing company for the official use. Block. ITC on, and here you can take the assumption that it is up to 13-seater. Question number 2. ITC on the aircraft purchased by the aviation school providing the training on the non-flying aircraft. Whether ITC would be available or not. Vaishali Bindal, please give the answer for this question. And once this question would be completed, I will go back to the clause AB and will revise. No problem. So here there is no question because it is being used for the training. So ITC would be available. Question number 3. ITC on the car purchased by the car dealer for sale to customer. Again, it is a very simple question. Allowed. So, because it is for further supply, so it is allowed. Question number 4. ITC on general insurance, car used by employees of a manufacturing company for official purpose. क्या बोलते हैं? Allowed or blocked? ITC on the general insurance. See, if the training is being, so whether it has been given, whether it has been told that that the training should be provided in flying aircraft, so no such condition is being added in that particular section. Darshan, no such condition is being added in the 17.5A or AA or AB, something like that. So ITC would be available. 4 is blocked. Yes, because car is blocked, so ITC of insurance is also not available. ITC on the buses purchased by the company for the transportation of employee for their residence to the office and back. ITC would be available or not?
देख, जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो कभी भी ट्रेनिंग में यूज नहीं होते, जो एक्चुअल लाइव होते हैं। तो जब ट्रेनिंग वो करते हैं ना, तो कुछ एयरक्राफ्ट स्पेशली ओनली फॉर द ट्रेनिंग दे आर परचेजिंग, सो दे विल नॉट बी यूज्ड इन द मार्केट एज ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। सो नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मतलब वो मार्केट में यूज नहीं किया जाता फॉर एक्चुअल पैसेंजर, दे विल बी यूज्ड ओनली फॉर द इन हाउस ट्रेनिंग. So they are giving the clarity that the aircraft is non-flying, but doesn't matter because the 17.5 is clearly saying if it is being used for the training purpose. They are not saying whether it should be flying or it should not be flying. Doesn't matter. So ITC would be available. So ITC on the bus, you are all saying allowed, eligible. What is the question number 6? ITC on the truck. Very simple question. Available. Is it available or blocked? So why fifth is blocked? Why fifth is blocked? See the sitting capacity. Why fifth is blocked? See the sitting capacity. See the sitting capacity, and it is 24-seater. Which one is blocked? Only for 13-seater is blocked. 13-seater is blocked, not the more than 13-seater. So if it is 24%, then it will be allowed, na? And similarly, it is being used for the goods. It is allowed. ITC for general insurance not allowed. Sale to the customer allowed. Training allowed. Not allowed. I hope it is clear. Any question, please ask. Any question, please ask. Any doubt, please ask. In that clause, it is given imparting the training on flying such aircraft. Correct, na? So what is the difference between flying and non-flying aircraft? I think you are going into much deeper. ITC on aircraft purchase for providing the training on non-flying aircraft. ट्रेनिंग नॉन फ्लाइंग मतलब जो ओपन मार्केट में फ्लाई करने के लिए यूज नहीं किया जाता. अगर वो ट्रेनिंग देगा, लेट्स से एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देगा, तो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मतलब जो फ्लाई कर पाएगा उसी पे तो ट्रेनिंग देगा ना. नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मींस नॉट ट्रेनिंग ऑन द नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मींस जिसको ओपन मार्केट में यूज नहीं किया जाता. दैट इज माई पॉइंट. So if you have the doubt, suppose if it is being asked in the exam and if you have the doubt, you can write your assumption. Na? We have assumed that this non-flying aircraft, तो फिर वो ट्रेनिंग क्या देगा? अगर वो ट्रेनिंग देगा तो क्या चीज की ट्रेनिंग देगा? मान लो वो उड़ ही नहीं सकता एयरक्राफ्ट, तो ट्रेनिंग क्या देगा? मेरे को बताओ. दर्शन आप बताओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें? जनरल इंश्योरेंस आईटी से अवेलेबल फॉर कार फॉर टैक्सी. हाँ हाँ अवेलेबल. सी अगेन मैं देखो वैशाली, मैं उस रेट नोटिफिकेशन की ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा हूं. हो सकता उसके कारण ब्लॉक हो. वहां पर कुछ रेट दी हुई है कि 5% चार्ज करेगा तो आईटीसी नहीं ले सकता, 12 चार्ज करेगा तो आईटीसी ले सकता. मैं उसमें नहीं जा रहा. अगर मैं 17.5 क्लॉज ए भी देखूं, तो अगर मेरा वो पर्पज है जो क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए के पर्पज में यूज हो रहा है, फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग, तो मैं आईटीसी ले सकता हूं फॉर एवरी एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी एक्सपेंडिचर. करेक्ट ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? 17.5 तो मुझे मना नहीं करता. ट्रक इज ओनली 2-सीटर. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ किसान? यूज क्या है ट्रक का? यूज क्या है ट्रक का? यूज क्या है ट्रक का, मुझे बताना एक बार. गुड्स है ना? गुड्स है ना? ऑब्वियसली गुड्स है सर. अगर गुड्स है तो एक बार जाना बेटा, यहां पर हमने जो बात की थी, किस व्हीकल की बात की थी हमने, यहाँ पे जो ब्लॉकेज की बात की थी वो किस मोटर व्हीकल की बात की थी? गुड्स वाला की पर्सन वाला? Whether we have blocked every, no sir, only for the transportation of person. So it means if the transportation of person, if it is being used for the transportation of goods, no problem.
मैं बात करता हूँ मनीष। हाँ, राइट शुभम, एब्सोल्युटली इट इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग बट नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। IT से built. Now one is asking question number 4, one is asking question number 3. ईशान क्लियर है ना ट्रक वाला? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 था कि कार यूज्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। बिजनेस पर्पस तो हम अलाउ नहीं करते ना। आर वी अलाउिंग द बिजनेस पर्पस? Vaishali, kindly confirm. Are we allowing the business purpose in the 17.5? No, sir. We are having the very specific purpose, further supply, imparting the training or driving. And then in the clause AB, we are saying if you are doing the manufacturing of the motor vehicle, manufacturing company, nahi, manufacturing of that motor vehicle. And the question says that it is the manufacturing company and for official purpose, the employee is being using the car. It means you are not doing the manufacturing of the car. Question is not saying the manufacturing of the car. Therefore, ITC is blocked. Please confirm, is it clear or not? ऐसा बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? He is purchasing the car for selling to the customer. One car dealer who is purchasing the car for selling the car to the customer. So it means it is further supply of that car. ITC would be allowed. ITC allowed है ना? एक बार वापस पीछे जाओ. See the particular condition which we have talked about, or see the exception which we have talked about. Exception says that if you are further supply that car, then ITC is not blocked. So in the question number 3, the car dealer is purchasing and then further using for sale to the customer. So it is further supply, so no problem, ITC would be allowed. Is it okay? (24) very nice question. Darshan, very nice question. Let me explain. Meanwhile, Vaishali and Aisa, please confirm. Question is really good, asked by Darshan. What is that question? I have to explain, and I will take some time to explain. No problem. See the entire. Following taxable supplies, it means your outward supply is taxable. Then you can take the ITC in these 3 categories. Which category? Which motor vehicle? Which motor vehicle? If the motor vehicle used for the transportation of person and up to 13-seater. एक बार समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा दर्शन ने, and it is really important. See what is the question and let me extend the question. Sir, in the clause AA, in the exception they are saying transportation of goods, but in the clause A they are not saying transportation of goods. Why, sir? I will discuss 2 points, and that would be probably the last point. Maybe not, no problem. Try to understand these things, which is really important to understand. First, let me explain within this clause AA. Here they are saying transportation of goods, but in the clause A they are not saying transportation of goods. Then how you are allowing the transportation of goods vehicle? Question clear है ना? कि भाई क्लॉज ए बी में, क्लॉज AA में तो उसने साफ साफ कहा है एक्सेप्शन में कि अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है तो आप ITC ले सकते हो, बट ये बात क्लॉज ए में तो नहीं कही गई. एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्लॉज ए, then it means how you are allowing the ITC. I am allowing the ITC because of this word. In the clause A, they are not saying all motor vehicle. Read carefully. They are saying motor vehicle which is being used for the transportation of person. See, in the clause A, they are
giving the longer sentence motor vehicle used for the person, and in the clause AA they are saying motor vehicle, sorry, vessel and aircraft, every vessel and aircraft. Therefore they are saying transportation of goods. अगर मैं मोटर व्हीकल की बात करता हूं, ट्रक की बात करता हूं, देन बिकॉज दे आर सेइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला जो मोटर व्हीकल है वो सिर्फ ब्लॉक है. इट मींस इन अदर वर्ड आई कैन से गुड्स वाला अगर मोटर व्हीकल है तो वो अलाउड है. सेकेंड थिंग, गुड्स आर अलाउड. इट इज immaterial whether you are raising the tax invoice, it means you are doing the business of that transportation of goods, or you are using for your own purpose. देखो दो बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. पहला बात, क्लॉज ए वर्सेस क्लॉज डबल ए. Here they are saying transportation of goods in the exception, but here they are silent. Why they are silent? Because in the block category they are saying we are blocking only the motor vehicle which is of the transportation of person. अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या मेरा खुद का बिजनेस है जिसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मैं कोई ट्रक यूज कर रहा हूं, अलाउड है आईटीसी, या उसका फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई होना जरूरी है? मेरा बात क्लियर है ना? क्या ट्रक का यूज के लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तभी आईटीसी मिलेगा, या अगर आप अपनी कंपनी के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब भी आईटीसी मिलेगा? प्लीज नोट, they have not given the transportation of goods in the below category. It means this is not necessary that it should be the following outward taxable supply. Not necessary. If you are using the good transportation of goods for your own goods, then also ITC would be allowed. यहां तक क्लियर है या डाउट है? एक बार कंफर्म करो. मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मजा आ गया. Yes, Bhumika, clause is talking about only transportation of person, so it is not talking about the goods, and hence if I purchase the vehicle which is being goods irrespective of any capacity, then ITC would be allowed. दर्शन क्लियर है ये वाली बात? सब लोग, बच्चा लोग बताओ कि क्लियर है ना? क्वेश्चन 4, ITC allowed if available. आईटीसी तो शुभम एक एग्जांपल दिया इंश्योरेंस कंपनी का मैंने, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया उस क्लॉज को समझाने का. देयर कैन बी द मल्टीपल एग्जांपल आल्सो, देयर कैन बी द मल्टीपल एग्जांपल. अब एक बात बताऊं, एक चीज और बताता हूं, इसी के साथ कनेक्टेड है, इसी के साथ कनेक्टेड है. यू विल एंजॉय द डिस्कशन. मुझे एक बात समझ में नहीं आई. देख दर्शन, मैं आप ही के बात को एक बात कह रहा हूं. देखो क्लॉज डबल ए में भी तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट डाला है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डाला है. देख यहाँ पे गौर करना, क्लॉज 1 में ये डाला है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को क्लॉज 2 में डाला है. देख एक बात ऐसी हो सकती थी ना कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को क्लॉज 1 के अंदर ही डाल दिया होता सपोज, तो कोई प्रॉब्लम थी. इसको अलग क्लॉज क्यों बनाया? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मतलब डिस्कशन बड़ा एंजॉय वाला है. अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का तो अलाउ करना है, तो उसको सेपरेट क्लॉज क्यों डाला? क्योंकि अगर आप अपनी फैक्ट्री के गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब भी अलाउड है. जरूरी नहीं है कि ये आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए. मतलब कि मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करूं तभी अलाउ है, ऐसा बात नहीं है. आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश फॉर माई साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. I am saying that why they have made the separate clause 2 for the transportation of goods. I am saying that for transportation of goods,
Why they have created the separate category? Because they want, it is not necessary that it should be the following taxable supply. You can use the truck for your own goods also, or it can be the outward supply also. No problem. You can use for own goods or you can use for outward taxable supply. No problem. Is it clear to all? Kindly confirm. Is it clear to all? Kindly confirm. डिस्कशन अलग एंगल में चला गया लेकिन मजेदार डिस्कशन था एंड थैंक यू यार दर्शन ने क्वेश्चन रेज किया बहुत बढ़िया समटाइम अलोंग विद गुड्स सम पीपल इवन आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक व्हाट वो व्हीकल का कैटेगरी देखा जाएगा मतलब व्हाट इज द कैटेगरी सो व्हेन वी आर परचेजिंग एनी मोटर व्हीकल वी आर रजिस्टरिंग दैट व्हीकल दैट एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट either we are registering for passenger or for goods. If it is registered in the capacity of the goods and you are carrying the passenger, then that is a separate issue. No problem. अभी क्लियर है ना ये वाला बात मैं आगे बढ़ता हूं सो the following supply of the goods or services are also blocked. Clause 1 says that food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of the motor vehicle, vessel or aircraft referred to in the clause A or the clause AA, except when used for the purpose specified therein, or life insurance or health insurance. Multiple expenditure ka name has been discussed in the clause 1 and all are blocked. First, try to understand this particular line. अभी मुझे कौन सा समझना है सिर्फ ये वाली बात मुझे समझनी है if you are leasing, renting or hiring of the motor vehicle. Suppose I am a XYZ Limited and I have taken the car on the lease for my director, or I have taken the bus on rent, or I have taken on hiring purpose. Can I take the ITC? They are saying you can take the ITC only when it is being used for the purpose specified therein. Clause A is talking about new car. Clause A or the clause double is talking about the purchase of the new motor vehicle, vessel or aircraft. Clause B is talking about you have not purchased, but you have taken on lease, rent or hire of that motor vehicle, vessel or aircraft, which is being mentioned in the clause A or the clause AA. Then ITC would be allowed only when it is being used for the purpose specified therein. If aircraft and vessel are used for purpose other than clause double and then ITC is block, am I correct? Yes, Bhumika. Rajiv Singh is saying that ITC is for both transportation of goods and passenger, then proportionate ITC will be available. You can say, but the vehicle ka category is being fixed. So you are not required to check at every point of time. मतलब ऐसे चेक करना ठीक नहीं रहेगा सी वो फिर आप अलग टोन में जा रहे हैं because either you have purchased the goods vehicle or passenger vehicle. Based on that, the ITC would be allowed or disallowed.
food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, life insurance, health insurance, ITC block. Now read the proviso. The proviso says that ITC shall be available where an inward supply is used by a registered person for making the outward taxable supplies. याद रखना एग्जाम में ये तीनों वर्ड आपके आने चाहिए. तीनों वर्ड आने चाहिए इस प्रोवाइजो में. भले प्रोवाइजो लिखो, भले आप अपने ओन सेंटेंस में लिखो, बट व्हेन द आईटीसी वुड बी अलाउड, when the ITC would be allowed of these expenditure if it is outward taxable supplies of the same category or as an element of the composite or mixed supply. Giving you example, let's say I have the business of catering. My outward supply is catering. I'm incurring the expenditure on catering business. Can I take the ITC? As per 17.5B, you can take the ITC. Suppose my business is cosmetic and plastic surgery, for which I'm incurring the expenditure on the cosmetic and plastic surgery. I can take the ITC. Suppose my outward supply business is this and I'm incurring the expenditure on this, I can take the ITC. Either it is same category or it is an element of the composite or mixed supply. Or it is an element of the composite or mixed supply. ITC is allowed if it is same category or composite or mixed supply. Composite mixed supply में, let's giving you one example so that you have the clarity. Suppose I am providing 2 or more taxable supplies in a bundled nature. Let's say my business is maintenance of aircraft, repair and maintenance of aircraft. I have the contract with the British Airlines UK. I'm giving you one example. I have the contract with British Airlines UK company. So what is my main contract? To repair the aircraft when it reached to India. So suppose I am located in Delhi, and when the British company ka aircraft reaches to Delhi airport, my team is providing the repair services. What is my main category of the business? Repair. Now, at that point of time, there is a contract with the British Airlines that suppose you took 2 hours. Suppose British Airlines company saying to me that आपको 2 आवर लगता है रिपेयर करने के लिए, तब तक मेरे जो मेंबर है क्रू के पायलट है उनको आप कुछ किसी अच्छे लॉज में जो एयरपोर्ट पर है वहां पे आप रुकाएंगे, वहां पे आप उनको रिफ्रेशमेंट देंगे, फूड एंड बेवरेजेस देंगे, वहां पे उनको मर्सिडीज कार यूज करेंगे फॉर पिक एंड ड्रॉप. समझिएगा एग्जांपल मेरा. That as per the contract, I am not only providing the repair and maintenance service. Basically, it is a bundled nature in which food and beverages is covered. Renting of the car is being also covered. So I can say these elements, food and beverages, is not the same category, but it is being given in the bundled nature. So either the bundling is composite or mixed. Therefore, I am allowed to take the ITC of these expenditure. मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे रहा हूं ताकि आपको क्लॉज में क्लैरिटी हो कि कहना क्या चाहता है क्लॉज. आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल इनसाइट इन लार्ज सेंस. सो यू ऑल हैव टू क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई. मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्यों इतनी बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा ना तो ये वर्ड बेटा जरूर लिखना, सेम कैटेगरी, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, वर्ड जरूर लिखना. इज इट क्लियर और नॉट? काइंडली कंफर्म. वैशाली सेइंग क्लॉज बी मींस कार हायर ऑन. हाँ ब्लॉक है, राइट. क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ या अभी कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बताओ, या क्लियर है तो कंफर्म करो.
एक बार स्टेटस बताओ तो मैं उस हिसाब से फिर आपके एक एक स्लाइड और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। इज इट ओके? दरअसल क्लॉज ए और द क्लॉज डबल ए का पार्ट क्या है कि मान लो जो मोटर व्हीकल आप यूज कर रहे हो ना, वो क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए के पर्पज में यूज कर रहे हो। वहां पे लिखा है ना कि फर्दर सप्लाई, मान ले मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बट कार मैंने परचेज नहीं की, कार रेंट पे लेके आया, ठीक है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट वो कार मेरी खुद की नहीं है, तो वो क्लॉज ए में नहीं आएगा। लेकिन कार आप क्या कर रहे हो, रेंट पे लेके आ रहे हो, तो क्लॉज बी में आ जाएगा। तो बट आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, for the purpose specified therein, so then ITC not blocked. So chalo, last slide for the day, that membership of the club, health and fitness center is blocked. Travel benefit extended to the employee on vacation such as leave or home travel concession, ITC blocked. Now this proviso is very, very important. It says whatever we have discussed, clause B, subclause 1, subclause 2, subclause 3, if the expenditure is an obligation for employer to provide to its employee. See, this is very, very important. When it is obligatory for an employer to provide to its employee under any law for the time being enforced, then you can take the input tax credit. You can take the input tax credit. Giving you one example, as per the Factories Act, because the labor is more than the required numbers given in the Factories Act, it is a compulsion on the company to provide the canteen facility. Expenditure incurred on the canteen, ITC allowed. Suppose, as per the Factories Act, if the company dealing in the hazardous material, it is a requirement that company should have the ambulance up to 13-seater, then ITC would be allowed because it is a compulsion by any other law. Workmen Compensation Act says that it is a compulsion on the company to take the life insurance, health insurance of the worker. Then primarily life and health are covered in the block category. But in this case, insurance taken as per any other law, ITC is allowed. During the COVID period, the Disaster Management Act was amended for a certain days, and in that they are saying it is a compulsion on the company to take the insurance of the employee. In that case, if the insurance has been taken during that period, ITC allowed. So now it's over to you. अब मैं मतलब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ. Now you can ask any question. स्पेशली ब्लॉक का भी एग्जांपल, फूड एंड बेवरेजेस में मेरी कंपनी है, एंड इन द कंपनी if I am working after 7 p.m, so they will provide the refreshment. So the food and beverages would be blocked. As per my company policy, they are taking the life insurance, health insurance of every employee. Whatever the GST paid by the company, it will be the block. Renting, leasing, hiring, ITC would be blocked except when they are covered in the clause A or double A का exception. बट इसको देखना, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं दर्शन बेटा, देखो एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे. अगर मैं इतने एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका प्रैक्टिकल आएगा एग्जाम में. थ्योरी तो पूछेगा नहीं कि या भाई आप बताओ कि आईटीसी का ब्लॉक है, कब अलाउ है. It will be given in the example. So that is the reason I'm giving you the example, multiple example to have the better clarity. यार ईशान, रेंटिंग, लीजिंग और हायरिंग नॉर्मली ब्लॉक है.
कब ब्लॉक है? अगर मोटर व्हीकल आपने अप टू 13 सीटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला लिया है या वेसल और एयरक्राफ्ट लिया है। कब अलाउड है? अगर आप वो जो 3 पर्पज है ना, फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग ऑफ द पैसेंजर और दैट इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ऑफ द पैसेंजर और फर्दर सप्लाई, और तीसरा क्या था, पैसेंजर को आप वो कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, इन दैट केस आईटीसी इज अलाउड, तो वहां पे अलाउड हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर पैसेंजर वाला वो ब्लॉक है। रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ द वेसल एंड एयरक्राफ्ट ब्लॉक है। कब अलाउ होगा? अगर वो क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए के एक्सेप्शन में आता है, मतलब इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड फर्दर सप्लाई, या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मोटर व्हीकल है। लेट से मैं ट्रक किराए पे लाता हूं, कैन आई टेक द आईटीसी? नो प्रॉब्लम। मैं बस किराए पे लाता हूं, कैन आई टेक द आईटीसी? नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज मोर देन 13 सीटर। ट्रक का क्यों मिलेगा? बिकॉज इट इज यूज फॉर गुड्स। बस का क्यों मिलेगा? बिकॉज इट इज मोर देन 13 सीटर। लेट्स से आई हैव टेकन द कार फॉर डायरेक्टर ऑन लीज, कैन आई टेक द आईटीसी? नहीं सर, अब ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए वाला मोटर व्हीकल है एंड उसका आईटीसी अलाउड नहीं है, कार का भी और रेंट, लीज और हायरिंग का भी। एग्जाम्पल ऑफ द 17(5)(ab) प्रोवाइजो टू 1 मारुति सुजुकी हूं सर। मैम, मैं मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं कंपनी, मैं होंडा हूं, और मेरी जो इन्वेंट्री है वो क्या है? मोटर व्हीकल, और उसकी मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, आई कैन टेक द आईटीसी। हेल्थ सर्विस में जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, देन ऑल्सो आईटीसी sometime it is applicable, so not necessary health. Say for example, they are not saying health every health service are not exempted now. So if so, you may have already discussed that health services when it is covered in the exemption. So every health service are not exempted if it is being provided by healthcare and by the allopathy, homeopathy, something that if it is not covered, then it will be taxable. So there would be the GST. Why it is being given separately in the B as a supply is already correct. To have the better clarity, as far as I can say, to have the better clarity actually है ना, क्योंकि वो confusion हो जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऊपर कवर्ड है और नीचे भी कवर्ड है, so probably to give the more clarity that I can say. Subham, why ambulance got to be a 13 seater if it is come under health service category and obligatory? Why ambulance got to be a 13 seater? नहीं, if suppose, again you can divide into category. Suppose my company is MNC, big reputed company, it is not covered by the Factories Act. Let's say it is not covered, so there is no compulsion on the my company, but they have purchased the ambulance because of the safety point of view. Can they take the ITC? Answer is no. Now let's take the second example, company B, which is liable, which is obligatory obligation on the company. Then we have to check na, because it is 13 seater, so ITC normally not allowed, but it is allowed as per the compulsion. Subham, clear है ये वाला concept? ईशान, why renting और lease block? when मैंने आंसर दे दिया। अब एक बार कंफर्म करो, सभी लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा क्लियर हुआ या अभी भी कोई पेंडिंग है तो मुझे वापस पूछ लो। भूमिका बिल्कुल सही। अगर मैं वो गुड्स और सर्विसेज जो यूज कर रहा हूँ ना क्लॉज 1 में, फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक, सब कुछ अलाउड हो जाएगा अगर आपकी आउटपुट सप्लाई सेम कैटेगरी है या एज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट या एज ए पार्ट ऑफ मिक्स क्लब है। क्लियर है ना अभी तक सारे? इज इट क्लियर और नॉट? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वाओ क्या बात है। सो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, नो रिवीजन,
because I have taken the revision in form of question in the class itself, in the PPT itself. ठीक है. So thank you very much. Good night to all of you. आप enjoy कर रहे होंगे, right? You are enjoying the class. Am I right? You all are enjoying the class. आप सब लोग enjoy कर रहे हैं, right ना? मजा आ रहा है ना पढ़ के? 70 मान लूं कि 70 नंबर लेके आएंगे टैक्सेशन में? चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. मनीष जी, आप इसको आज का सेशन वाइंड अप